Good evening, everyone. This is Prajakta. I would like to warmly welcome you all on behalf of NGEN Research. Meanwhile, others join. What I'll do is I'll just introduce our topic for today. Um, our webinar discussion for today will predominantly revolve around building a client's portfolio, which is specifically equity oriented yet diversified. What will specifically be on our agenda is bursting the myth that you need to add a debt in order to facilitate diversification. You could, in the process of the webinar, I will specifically tell how, with numbers, of course, how we can effectively build a diversified portfolio with respect to only equity oriented sectors, and really see how the correlations are really different and still create an inflation hedge. So that's definitely number one on our agenda. Secondly, we will for this specific analysis, we will definitely go ahead and add a non-standard asset to the client's portfolio and create an inflation hedge. Specifically, let's say gold, for that matter. We will also compare how even a gold mutual fund gives same effect of adding a physical gold to client's portfolio. Next, we will compare a model portfolio, which is a diversified one, with the client's existing portfolio, which will be with debt as well as equity, and show with numbers how only a equity oriented diversified portfolio will give you better specific returns, and you need not specifically rely on debt to really diversify. Firstly, to start with, what we will specifically do is look at the markets tab. In the markets section, we have multiple sectors, nifty sectors listed right here. So let's understand which were the ones which really outperformed Nifty as a benchmark in the last, let's say, 2 years. For that, just click on Nifty 50. When you click on this levels get plotted, and let's see which are the specific sectors which have really managed to outperform Nifty 50 as an index. For that, just click on this 6 months analysis, and we can specifically see that banks, FMCG, and auto as a sector have really outperformed. These were the top performing sectors of NSE. How do we prove it? Just scroll down and go ahead and add them one by one. So now I have added Nifty FMCG as a sector in this line chart. So what I can specifically see is from 2021, Nifty has specifically generated a return of 24.92%. On the other hand, Nifty FMCG as a sector has really managed to outperform the Nifty 50 index and generated a 32.39% return. Let's just go ahead and add in a couple of them more. So we can even see in the last 6 months, auto has been outperforming. Let's just go ahead and add in auto. Same performance. So we can specifically see that 40%, whereas Nifty was only at 24.92. We could definitely go ahead and add in a couple of them more and see how they have specifically managed to outperform Nifty 50 as a benchmark. And these are the specific selected sectors. So now let's just go ahead in the compare section and add them up in the compare section to understand how do they correlate to each other. So including only these specific 4 sectors, will it really lead to a diversified portfolio? And how do you check that? You check that with the correlations analysis. So in the compare section, just go ahead and add the indexes right here. So Nifty Auto, Nifty FMCG, Nifty Bank, and Nifty IT. So now that I have added all of these 4 sectors, I will just go to correlations analysis. That's here, this tab on the compare section. When I click on this, I can specifically see that these 4 sectors are internally, it's not very highly correlated. So what correlation specifically tells is how closely the NAV movements of the specific sectors will be. Of course, these are sectors as a whole. So how closely do these sectors go along with each other in a specific up move or a down move.
So we can specifically see Nifty FMCG has a correlation of 0.52 with a bank, which is not definitely very high. On the other hand, it has a very low correlation with Nifty IT. So including these four specific sectors in your portfolio will definitely lead to a diversified portfolio. For that, let's just go ahead and choose these specific four sectors and look which of the mutual fund schemes from these specific four sectors are really outperforming in that specific category. For that, just click on filter categories in the funds section and choose only these four categories. So that will be sectoral auto, sectoral FMCG, sectoral banking, and infotech. All of the mutual funds that are currently trading in these specific four categories have now been listed. Now, how do you really shorten your search? How do you screen the mutual funds, the best out of the lot? So let's just put in some filter parameters. The first one being, let's say we want to consider only those funds who have a minimum reporting history of, let's say, 5 years. For that, in this minimum age criteria, just put in the minimum age is 5. Let's say you want to include only those who have at least a AUM size of 1,000. So just put in 1,000 as a minimum AUM criteria. And you want to put in further filtration saying the Sharpe's ratio of these specific mutual funds should be at least 0.50. So what does Sharpe's ratio really signify? So it specifically says what is the risk adjusted returns that were really generated by these specific funds. And the general parameter is higher the Sharpe's ratio, the better it is. So let's just put in a 0.50 as a parameter for Sharpe's and just click on apply. So when you click on apply, from the entire long list that we previously had, we have only these specific funds which really meet all of this criteria. And you can specifically see all of these Sharpe's ratios are about 0.50. And then we can specifically see that this specific list does not have any auto as a auto sector mutual fund. So that's specifically because it doesn't meet any of our criteria. So what we will first do is take all of this to the compare section to perform further analysis, and then go ahead and add in an auto and see how many mutual funds are really there in the auto as a sector. So what you need to do is just click on this add top 50 to compare with just one button. All of these 6 or 7 of funds will get added in the compare section. Within a matter of a click, all of the 8 ones have gotten added. Now let's just go back and see what really happened with auto as a sector. Just clear the criteria, and I can see there are only 3 specific mutual funds in auto as a sector. And out of them, only one specific mutual fund, which is UTI Transportation and Logistics Fund, has a positive Sharpe's ratio. So this is the specific one fund that will really be a part of our portfolio. So just click on this specific add to compare button and this will get added right here. Now that we have added these in our compare section, let's just go ahead and look which of them have really reported a highest Sharpe's ratio. So for that, just click on this Sharpe's ratio and then this will really sort them up. What we can see is FMCG, top performing fund in FMCG as a category was ICICI Prudential FMCG Fund. In IT as a category, it was SBI Technology Opportunities Fund. So all the others you can definitely keep one from a single category and then see how the diversification really works. So for that, I have just created a specific list for our webinar sake. I'll just load that up. For that, just click on this My List and just choose whichever list that you have saved. And these are the specific 4 funds that really meet the best criteria of among the entire categories. Just go on correlations analysis and you can specifically see these definitely have moderate correlations with each other. We have FMCG fund, we have a technology, so IT fund, we have a banking fund and a auto sectoral fund. So we can specifically see there are no very high correlations, and this will definitely contribute to a diversified portfolio. Now, before proceeding and converting this to a portfolio, what we can specifically see is how should we add a specific non-standard asset, let's say gold for that matter, to create an inflation hedge. Because all of these specific mutual funds will be definitely from equity as a category. And then when equity markets really underperform, your portfolio is definitely
will be exposed to underperformance. For that, what we can definitely do is go to My Securities tab and load in gold prices. So how do you do that? So when I just click on My Securities, just click on Add a New Security. I have saved gold prices, which have been downloaded from MCX. All I need to do is have the time series and price series data of gold. I will just select them and just copy it up from Excel to NGEN Markets. When I specifically do this and click on validate, the entire gold price, which is, this is the physical gold prices, have gotten populated. Just name this as gold and choose the asset class as other, because this is specifically a commodity, and click on save. When you do that, this now you can definitely go ahead and add gold as a security in the portfolio that you were just trying to build. Let's just go back to the compare section and see how we can add the gold prices that we just saved. For that, just click on this select security and choose gold. So we can specifically see that this is the custom security that has just gotten added with a price of 56,192, the closing price of just a couple of days before. And when we just click on correlations, we can specifically see that this has rather negative, sparse negative correlation with the equity sectors. So this will definitely give a balance when the equities really underperform, and also the inflation hedge. Now, instead of really going ahead and adding a gold as a security, what you can also do is go ahead and there are some mutual funds which really track gold as a price. So what we can do is just go ahead and put in a HDFC gold fund and see how does this really closely track the specific gold as a physical commodity, and do really those correlations really match up. So when we just click on correlations, we can specifically see that even the gold fund has typically lower correlations with all the others. So with Nippon India Banking and Financial Services, which is a banking sector fund, it has negative 0.18 correlation. With UTI Transportation and Logistics Fund, which is definitely auto sector fund, has a negative 0.18 correlation. So instead of definitely going ahead and adding gold as a security, you could also achieve the inflation hedge that you're really looking to add in the portfolio with even a gold fund, right? This is specifically how you can take a decision as to whether to include gold as a security or gold as a fund. So let's just remove this from our compare section and just convert this up to a portfolio. To convert all of this into a portfolio, all you need to do is click on convert to portfolio. When you do that, the entire selection that you just have has gotten saved into a portfolio with the specific equal weightages. You could just then go ahead in the portfolio section and change the weightages if that is specifically what you would like to do. So in the compare section, this is the specific portfolio that we just created. So you can see that there are the mutual funds, the ICICI Prudential, FMCG fund, technology fund, auto fund, banking fund, and even the gold. Let me just choose a specific benchmark for this. When I choose Nifty 50 as a benchmark, I can specifically see that there is a clear outperformance of this portfolio vis-a-vis the benchmark. The black line is the Nifty 50 benchmark line, and the blue line is the portfolio performance line. So we can specifically see that the Sharpe's ratio that was really generated by the portfolio was 0.53 vis-a-vis the benchmark Sharpe's ratio during the same time, which was only 0.2. With respect to the downside risk protection that is really signified by value at risk parameter, we can see that with a 95% confidence interval, our portfolio that we just built, the diversified portfolio, has a downside risk protection of 17.31% vis-a-vis the benchmark value at risk of negative 25.87. So that specifically means that our portfolio has a better downside risk protection vis-a-vis the benchmark. When we scroll down, what we specifically can see is how this portfolio matches up with the benchmark in a bull run as well as a bear run. So we can see that in any given bull run, when the benchmark goes up 61.15% of the times,
our asset that we have just created, the portfolio that we have just created, matches up closely to an extent of 44.25. And how does it capture in a bear market? So for that, just click on this I button, and you can see that in any bear run, when the benchmark gives in negative 32.97, our portfolio gives a better downside risk protection of 16.87. It only falls 16.87% of the times. So that's specifically how you can see that we have actually created a portfolio which is better with respect to this benchmark in these specific parameters. Now let me just show you how you can definitely edit the weightages. So let's say going forward, I would like to allocate a higher weightage to FMCG, because let's say me as advisor I'm really bullish on FMCG as a sector. For that, I'll just click on edit or save as. And when I click on this, a new window opens up wherein I can definitely change the weightages. So let's say in this specific fund, in the specific mutual fund portfolio that I've created, I want to allocate a higher percentage to FMCG as a fund. I'll just click on edit here and then allocate a 40% to this. Before proceeding, all you need to make sure is you rescale this portfolio to 100 and just click on update. It's that easy to really change the allocations in the portfolio. So now when I click on run of the specific portfolio, it will have a higher weightage to FMCG. So I can specifically see the weightage has really increased. Now let me just go ahead and compare a vis-a-vis portfolio comparison of this specific portfolio that I have created with a portfolio which has debt as a allocation, and show how this really outperforms. So for that, just click on this portfolios. There's a compare two portfolios option. When you click on this, you will be taken to the compare section. In the client section, just load in one specific client's portfolio. So this Rakesh Kumar's portfolio that I have really loaded is a debt and equity oriented portfolio. So how can you really check that? So just come to the client section and you can specifically see equity and debt. So it has debt for diversification. And then let's just go back and load in the portfolio that we just created, which had all the equity oriented funds, and then how you can specifically see how was the outperformance. This is specifically what you can see. So there was definitely a positive outperformance, a better annual return of 0.78 when we load these two specific portfolios side by side. Just click on asset allocation and we can see that equity, this specific portfolio that we have created, diversified equity oriented portfolio, has 75% allocation to equity. And the other portfolio that we just created had only 50%. So in spite of that, we have definitely went ahead and created a better portfolio with only equity as a asset class. You can definitely go ahead and look at drawdowns analysis. What drawdowns analysis will really show is the strength of the portfolio. So how many days does the portfolio take to recover from a specific loss? All the portfolios that are really market based are definitely going to be exposed to market risks, and they will definitely experience losses at some point of time. But what is really important to check is how fast does the portfolio recover from a specific loss. That is something that is really important. How quickly does any portfolio recover from a specific loss? So that is specifically indicated by the recovery days that you can see here. So how quickly does a portfolio recover? And then let's say you want to show this specific comparison to your clients, just click on create a PDF, and you can definitely go ahead and create a amount based PDF. So put in amount of, let's say, 10 lakhs and click on go. This is specifically the amount-based PDF that has gotten generated. It has asset allocations, market capitalizations, the rolling returns as a parameter. And when you scroll down, it will be in terms of rupee in lakhs. So this is the client's existing portfolio, which is debt plus equity. And this is the diversified portfolio, which has only equity.
and in these specific amounts. This is something that you can definitely check. Now, let's say you want to check the year-wise performance of a specific portfolio. For that, you just have to click on years, and you can specifically see how year on year the performance of the components of the portfolio really panned out. Let's say you want to check which of the components of this portfolio were outperforming in 2021 as a calendar year. Just click on 2021 and you can specifically see that IT fund, SBI Technology Opportunities Fund, was the outperformer in this 2021 as a calendar year. But when we look at 2022, we can specifically see it was the worst performer of the calendar year, and gold, which was really a underperformer in 2021, turned out to be a positive performer. It returned return of 12.69. You can definitely check how the performance of the components of the portfolio were across the calendar years in this manner. With this, we definitely end the topic-related webinar today. We can definitely throw the forum open for Q&A. If you have any questions, you can definitely ask them in the chat box, or you can definitely unmute yourself and speak. Ma'am, we'll not call this as a thematic portfolio rather than a diversified portfolio, because there are all thematic funds into this. Yes, definitely. I think maybe that might be a better way to describe it. But generally speaking, this is kind of meant to be an example of how you can take some ideas and then look for the right funds and put them together to test out new portfolio ideas. So yes, I mean, this would probably be more of a thematic portfolio. Hi. Hi. You have added gold in a under my security as a security in security tab. Yes. So can we add this gold in customization of benchmark? That's a great question. Can you Prajakta just run any fund or anything? Let's just have a quick look. I don't think you can. However, I think we are quite close to getting gold in as an index. So that should solve your problem, gold, silver, and other commodities. Just load any fund. We just want to quickly look at the custom benchmark. Yeah, and then let's just open that pop-up there. Okay, now so only indices that are available. So we are going to very soon actually be adding gold, silver, and whatever else we can find, but gold, silver for sure into here. So then you'll be able to create a custom index using that as well. Okay. One more question. Yeah, please. Can we give a other name to compare it? You have given the name to compare 8 portfolio. Can we edit this and? Oh yeah. So Prajakta, just do it again, so it's clear. Just name something. Yeah. So you click on the edit rename. Sorry. Yeah, and then it'll immediately open up a box. You type anything there and hit enter. Okay, got it. Thank you. No problem. And also in terms of keeping your portfolios, please be aware that you can shift around these portfolios in folders. When you open that down arrow again, just for any portfolio projector, let's just show them, just shift one portfolio from one folder to another. So just take that and so you can move it to any of your, just move this one. There you go. So you can move to a different folder or a new folder, whatever you want. One more question. Under my security tab, there was 3 columns. One is equity, one is debt, and one is other. So in other, you have created a gold as an instrument. So what's in the equity and debt? What kind of instrument? So these are actually, this asset class is basically nothing but a folder for you. So Prajakta, just scroll up here in this list and just put all the folders up. Collapse them. Yes. So this is basically so you can organize your custom securities more easily. So we've got this pre-named folders.
So ideally, if you have a stock or let's say a foreign stock, you keep them in equity. If you put Okay. so this is just, it won't matter to the actual result at all. It's just, Okay. you're saving it in the equity folder, debt folder, or other folder. That's it. Okay. Okay. Yeah. It's just a tag. It's in the debt column. It's a something kind of overtraded count OTC bond or something debt fund in Yeah. debt column. Yeah. So Prajakta, let's open the debt folder up. So yes, these have been added by somebody in our team. Okay. Okay. So these are what I mean OTC bond or hello. Hello. Sorry, could you repeat that, please? I could. Under debt column, what is this? This is OTC bond or something debt fund in debt column? No, no, actually these, so Prajakta, just run it. So this is actually what this is we've made a couple of debt strategies. Okay. So this is a conservative debt portfolio. I mean debt fund. It's all are the debt funds here mentioned in this under debt category. Yes. So here they all when you click on this is a custom security, but it's coming out of MLDs. We cannot. So can we add direct OTC bonds or some MLD kind of instrument into debt category? If you can create a price series that reflects the return from that bond, then you can put anything here. It doesn't matter. Date and price. Right? Okay. So you can put whatever you want. Okay. Understand. Got it. Yeah. In fact, one of the reasons that you see this these columns here in debt, for example, what this is what we've run the portfolio in the portfolio section. Prajakta, just go to the portfolio section. So let's say you run any portfolio, just run anything. And let's say you want to compare many portfolios together. One of the ways that you can do this on NGEN Markets is once the portfolio finishes running, you can download the prices by clicking that. And that Excel will already be format ready for you. So when you open that Excel, we'll just show you. You can just copy the first two columns, date and price. And then you can save the portfolio backtest price series as a custom security. Right, so you can copy and paste this into the custom securities, and it will be available for you in terms of any analysis you want to do. For example, you can make a portfolio of portfolios if you want. You can add them to the compare section. So when you validate this, there's no need to save it. Let's just validate and see. Yeah. Okay, so that's the portfolio backtest that you see in the blue. Got it. And you can keep going round and round if you want. So, but point is you can save anything here. Okay. There's a question on the chat saying, can we get today's recording? Yes, definitely. In a day or so, it will be online on our YouTube channel. Prajakta, you can show them. Yeah, this is the link to the YouTube channel. So we update all our webinars here. It's reasonably useful. I mean, you can actually look at the playlist. Some of there's some shorts as well. So these are the webinars. So everything's updated here. So today's session will also be there. And there's some shorts which if you don't have enough time, you can just look through. There are some quite interesting and cool things here that you may not be aware that you can do on NGEN Markets. So it's worth kind of going through these if you have some free time. Any other questions? Please just unmute and ask or just write on the chat. Thanks. हेलो हाँ Yeah. हेलो मैं Yeah. धर्मेश बोल रहा हूँ हाँ जी। आपने अभी जो प्लेलिस्ट मुझे बताया था वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर में जब हम लोग ओपन करते तो कहाँ से मुझे मिलेगा? हाँ जी, ऊपर आप देखिए टॉप राइट पे एकदम FAQ के बाद क्लाइंट लिंक्स है, उसके बाद ये वीडियोस वाला लिंक है ऊपर टॉप पे। कहाँ पर? सर टॉप पे देखिए, टॉप एकदम जहाँ पे हमने माउस से दिखा रहे हैं। माउस तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा कहीं पर?
आप बेसिकली Okay. आप जब हाँ। एंजन मार्केट्स में लॉग इन करेंगे ओके वीडियोस है। ओके हाँ जी वो वीडियोस ओके ये एक्चुअली अगर आपको लॉग इन भी नहीं करना तो आप गूगल पे आप सर्च करिए एंजन मार्केट्स यूट्यूब, आपको सीधा मिल जाएगा। ओके फाइन फाइन। थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर। हेलो सर। हाय सर धर्मेश मेहता सूरत से हूँ सर। हाँ जी बेसिकली मेरा क्वेश्चन था म्यूचुअल फंड्स रिगार्डिंग। हाँ जी यस 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 प्लीज क्लिक ऑन फंड्स। आइडियली जो हमारे डेटा जो शो कर रहा है ना स्पेसिफाइड, आई एम टॉकिंग अबाउट एसआईपी रिपोर्ट, जी मंथली एसआईपी। हाँ जी जस्ट होल्ड ऑन लाइक तो सर एसआईपी इस रिपोर्ट वाले कंपेयर सेक्शन में दिखता है और सेपरेटली भी आप सेपरेट मंथली एसआईपी में जाए ना सर, मंथली एसआईपी सर। ये रहा ये वाला। यस यस नहीं नो नो हाँ नो। ये दो जगह है हमारे पास एसआईपी के, आप कौन से के बारे में पूछ रहे हैं? सर ये हुआ और जैसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट का डेटा कहाँ पे आएगा? अच्छा वन टाइम तो आप जैसे आप किसी भी फंड को रन करिए, आपको अमाउंट अगर रुपीस में देखना है तो इन टर्म्स ऑफ लमसम, द लमसम अमाउंट। हाँ जी लमसम आपको सीधा फर्स्ट पेज पे दिख जाएगा। आप किसी भी फंड को लोड करेंगे तो उसके अभी टॉप पे अभी आ जाएगा, एक सेकंड। ये ओके यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे अगर आपको स्टार्ट डेट चेंज करना है तो यहाँ से आप स्टार्ट डेट चेंज कर सकते एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन यही था, मुझे हैं। हाँ यहाँ जी पे इन्फ्लो चेंज करना था, तो यहाँ हाँ पे जी कहाँ से जाना रहेगा? ओके चेंज डेट ना, तो चेंज मुझे सर्टेन पीरियड का चेक करना हो तो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 15 से लेके 20 का भी करना हो तो मैं कर सकता हूँ ना? सर यहाँ पे जो ये एनालिटिक्स का पेज है यहाँ पे आप सिर्फ स्टार्ट डेट चेंज कर सकते हैं ओके एंड तो यहाँ पे ये लिमिटेशन है क्योंकि सारा डेटा लेटेस्ट दिखता है। अगर आपको स्पेसिफिक डेट पे करना है तो प्रोजेक्ट लेट्स गो टू पॉइंट, तो हाँ उसकी भी एक जगह है वहां पे। अभी एज ऑफ नाउ हम लोग परसेंटेज में दिखा रहे ओके हैं, रुपीज में नहीं दिखा रहे, बट ये एक ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट है जो ये काफी मतलब हो जाएगी, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल देखिए जितने भी फंड आपको डालने हैं आप डाल सकते हैं लिस्ट में, और उसके ओके बाद कोई भी स्टार्ट एंड डेट आप अपने इच्छा से आप लगा सकते हैं यहाँ पे, एंड वो डेट्स एक्चुअली वो रिमेंबर भी करेगा कि आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो वही डेट्स पड़ी रहेंगी वहीं पे। तो यहाँ पे आप कोई भी डेट डाल दीजिए और आपको रिटर्न दिख जाएगा। एंड हमारा जो नया रिलीज आएगा उसमें हम ये भी ऑप्शन दे देंगे कि आप जैसे 10 लाख टाइप कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि 10 लाख का इतने पीरियड में स्टार्ट से एंड तक 10 लाख का क्या होता। ओके अभी सर आपको सिर्फ परसेंटेज दिखेगा अभी, और ऊपर आप यहाँ पे ये चेक कर लीजिएगा कि हमने अभी एनुअलाइज दबाया हुआ है। अगर आप स्पेशल ये एनुअलाइज चाहे छोटा भी पीरियड हो एनुअलाइज करता है। तो अगर आपको सिर्फ एग्जैक्ट रिटर्न देखना है तो आप एब्सोल्यूट को क्लिक करिए, तो आपको जैसे 3-4 महीने का पीरियड भी है तो वो भी दिख जाएगा। गॉट इट सर, गॉट इट सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Any other questions, please just type on the chat or just unmute and ask us, please. एक्सक्यूज मी, हेलो। Yes, yes, yes. हम लोग जब ओवरलैपिंग या फिर अगर हम लोग 5 या 6 फंड की कंपेयर करते हैं, ठीक है, जी। अलग अलग स्टाइल की, तो हम लोग जब पोजीशन ओवरलैप की देख रहे हैं ना, हाँ जी।
रिस्क हाँ पोजीशन ओवरलैप नहीं हाँ पोजीशन ओवरलैप अगर हाँ जी, अलग अलग फंड हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो हाँ उसमें जी, ग्रीन जो होता है ना वो 3 शेड के होते हैं, हाँ जी। अलग अलग 3 शेड के ग्रीन हम लोगों को मिल रहा है, तो तीनों का एक्चुअली क्या डिफरेंशिएट है? सर वो एक्चुअली जस्ट उसको थोड़ा सा आपको जैसे आइडिया मिल जाए इसमें आप हाँ तो जस्ट लोड अ बिगर लिस्ट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप बेसिकली ग्रीन मतलब जितना लाइट ग्रीन है मतलब उतना कम ओवरलैप है, नंबर वैसे भी लिखा होता है वहाँ पे नहीं वो एंड हाँ जी हाँ ठीक है दैट्स फाइन। सो सर देखिए वहाँ पे लिखा है 0 to 20% ओवरलैप होगा तो लाइट ग्रीन होगा, अगर हाँ ओवरलैप थोड़ा ज्यादा है 20 to 40 के बीच में तो वो हाँ डार्क ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद अगर 40 to 60 है तो ऑरेंज हो जाएगा, दैट मीन्स अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। 60 to हाँ 80 का काफी ज्यादा है तो पिंक हो जाता है एंड 80 to 100 तो बहुत ही ज्यादा है तो वो रेड नहीं हो वो जाएगा। तो और एक का है एक और जगह है सर कोरिलेशन, कोरिलेशन में जाना एक बार। हाँ तो हाँ यहाँ पे भी अलग अलग शेड है सर, यहाँ पे जो शेड की जो स्टेप्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं। तो हाँ यहाँ पे हाँ तो सर यहाँ पे जितना डार्क ग्रीन होगा ना हाँ मतलब कोरिलेशन उतना ही ज्यादा है। तो फॉर एग्जांपल आप देखिए 0.96 है तो ये दो लिक्विड फंड है, एसबीआई का एक है एचडीएफसी का है, लिक्विड फंड तो साथ साथ ही चलेंगे। तो हाँ ये वो तो कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं। मैं क्योंकि हाँ केवल ग्रीन 3 शेड था ना इसलिए मैं सोच रहा था कि जिसका सबसे ज्यादा आई मीन क्या रिटर्न है वो सबसे कम है, डबल डिजिट का नहीं रिटर्न। नहीं 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 ये सिर्फ ये कोरिलेशन है, अब कोरिलेशन। अगर ईयर्स में जाइए ना, ईयर्स में हाँ 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 किसी फंड, अब देखिए यहाँ पर ना 3 ग्रीन है अपने पास, हाँ जी। तो सो ये ये तीनों ग्रीन जो हाँ हाँ देखिए जी इसी में देखिए अपने को 3 ग्रीन मिल रहा है, एक हाँ जी सर ऊपर से नीचे से दूसरा और ऊपर से 2, तीनों हाँ अलग जी अलग ग्रीन है। सर इसका मतलब ये जैसे अभी प्रोजेक्टर ने सॉर्ट करके दिखाया है ये इसका मतलब यही है, हमने इसको बस ग्रीन दिया हुआ है कि रिटर्न कितना स्ट्रांग है। जब ओके डार्क ग्रीन हो रहा है मतलब काफी अच्छा रिटर्न आया है और एकदम आप राइट नीचे देखेंगे सिर्फ 3% आया है तो वो ठीक काफी है लाइट ग्रीन है। और रेड होता है तो ओके रेड का भी अपना स्केल है, हाँ बहुत वो समझ डार्क गया, रेड मतलब बहुत ही बेकार और उसके बीच में फिर -4 थोड़ा सा कम रेड है। फाइन फाइन तो बस इस ठीक है, तरीके से बस हमने मुझे किया यही हुआ था क्योंकि है। हाँ मैं जी सोच रहा था जो एकदम लाइट ग्रीन है क्योंकि उसका डबल डिजिट से नीचे रिटर्न है, मैंने वो सोचा था नहीं नहीं कि नहीं नहीं, ये जितना इससे लाइट आपको होगा वो हाँ एकदम जी कम होगा। हाँ जी तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे पूरे ये टेबल में अच्छे और गंदे रिटर्न्स किधर है। राइट फाइन फाइन हेलो। हेलो यस सर जी राहुल देसाई बोल रहा हूँ वापिस से। हाँ जी बोलिए कैसे हैं जी। फाइन सर, वही सर। गुड गुड। सर मैं जस्ट अभी एनालिसिस कर रहा था तो अभी हाँ मैंने रिसेंटली एक क्लाइंट का पोर्टफोलियो उसमें अपलोड किया पूरा। जी ठीक है, तो उसमें आपका ब्रेकअप मुझे वहां पे दिखता है कि भाई कितना लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। हाँ जी बट मैं जब उस पोर्टफोलियो को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मुझे हाँ वहां जी। पे वो ब्रेकअप नहीं मिलता है कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप सेक्शन वाली है, कौन सी कंपनी मिड कैप वाली है, कौन सी कंपनी स्मॉल कैप वाली है। अच्छा तो पोर्टफोलियो के आप पोर्टफोलियो को जब डाउनलोड करते हैं हाँ यस अच्छा एग्जैक्टली। प्रोजेक्टर इज गो टू एसेट एलोकेशन ओवरव्यू एंड देयर इज एक्सेल डाउनलोड देयर, ये टॉप पे। हाँ आप इसकी बात कर रहे हैं ये जो एक्सेल आ रहा है। हाँ ये जो मान लीजिए किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैंने अपलोड किया हुआ है, हाँ तो जी वो पोर्टफोलियो में आप एसेट एलोकेशन या कहीं पे जाएंगे ना, आपका जो हाँ जी सेक्शन रहता है वो, हाँ जी तो वहां पे वो खुद कैलकुलेट करके हमको दिखा देता है कि इतना लार्ज कैप एलोकेशन है, इतना मिड कैप है, बट जी और इतना स्मॉल कैप है। बट जब मैं पोर्टफोलियो मान लीजिए कि उसको फिल्टर करके कुछ मुझे डाउनलोड करना है, तो आई हम्म जस्ट वांटेड टू सी वेदर विच कंपनीज आर फ्रॉम अच्छा लार्ज कैप सेक्शन और फ्रॉम मिड कैप और फ्रॉम स्मॉल कैप, वो अच्छा मुझे नहीं पता चलता। So तो then again, I have to go प्रोजेक्ट back to the other sites where I can see what are the market caps यस of individual stocks, and accordingly I have to classify them. तो ये हम इजी कर सकते हैं आपके लिए। प्रोजेक्ट इज गो टू द ओवरव्यू एंड डाउनलोड द एक्सेल, एक बार देखते हैं उसमें कॉलम्स क्या हैं बिकॉज देन वी कैन ऐड फॉर इसमें ये सारे एक्सपोजर्स हो गए आपके। ओके आई थिंक यही है हाँ। ओके तो यहाँ पे हमें एसेट क्लास इक्विटी है यानी स्टॉक है, उसका आपको सेक्टर दिख गया है। तो देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है ये एक्चुअली ये जो नहीं बट डाउनलोड है यहाँ ना। पे एग्रीड सर, बट इसमें मुझे ये नहीं ब्रेकअप मिल रहा है कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप वाली है, कौन सी मिड कैप की है।
जैसे ये मैं देखिए सेक्टर वाइज थर्ड आपका ब्रेकअप मुझे मिलता है कि थर्ड मान कॉलम लीजिए कि देखिए, थर्ड कॉलम, केमिकल सेक्टर। हाँ जी सर, ये थर्ड कॉलम देखिए, इसमें लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप लिखा हुआ है। कहाँ पे सर, मुझे नहीं दिख रही। ये आपको जो स्क्रीन शेयर किया हुआ है आप दिख रहा है आपको, एक्सेल खुला हुआ है। हाँ एक्सेल खुला हुआ दिख रहा है मुझे। हाँ जी, आप देखिए कॉलम सी देखिए, ये हमने अभी अभी डाउनलोड किया है। ओके तो सर, जहां मुझे पे भी, शायद, हाँ हाँ अभी जी, कुछ आया। हाँ हाँ जी, ओके, ये तो ये तो फाइल आपने कहाँ से डाउनलोड करी सर? हाँ, प्रोजेक्ट का गो बैक एंड जस्ट शो कि हमने कहा, ये आप एसेट जब पोर्टफोलियो रन हो जाएगा ना, तो एसेट ओके एलोकेशन का पहला टैब आता है हमेशा। ओके उसके अंदर जो पहला टैब है ओवरव्यू, जब आप ओके इसको क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे ये एक डाउनलोड ऑल एक्सपोजर्स का बटन है। ओके 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 इसको क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी एक्सपोजर है, चाहे वो स्टॉक हो, बॉन्ड हो, कुछ भी हो, सब एक्सेल में ओके आ जाएगा। और जहां जहां ओके आपको स्टॉक है वहां पे आपको थर्ड कॉलम में लार्ज कैप दिखेगा, अदरवाइज डैश दिखेगा। ओके 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 ओके, ठीक है जी, सर, ठीक है ठीक है ठीक है। वेरी गुड, गुड। एक क्वेश्चन है मुखर्जी साहब। हाँ जी, हाँ जी, ब्रदर, जो ये अपनी फाइल्स आप बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, ई कैश फाइल ये आपने मेरे को ऑप्शन दी हुई है ना? जी, उसके अलावा जैसे सीएसवी फाइल आपके सिस्टम में आती है या कोई और एक्सेल एक्स फॉर्मेट यूज करता है, हाँ जी, क्या पॉसिबिलिटी है भी अपना किसी सॉफ्टवेयर, क्योंकि सबके पास ईमेल वर्जन अपलोड नहीं होता कैन्स और कार्वी के एनएसडीएल और सीडीएसएल पे, जी, है ना? तो हम लोगों ने जो पोर्टफोलियो बनाए होते हैं वो फैमिली वाइज भी बनाया है, कुछ भी किया हुआ है। ठीक है। तो पॉइंट ये है भी हर हर सॉफ्टवेयर का फाइल फॉर्मेट अलग होगा, हाँ जी, है ना? तो क्या अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन दिया जा सकता है भी ई कैश के अलावा किसी भी फॉर्मेट की फाइल हो वो आपका सॉफ्टवेयर सपोर्ट करके वो उठा ले? हाँ जी, तो ऐसा हमने एक बनाया हुआ है। तो ये जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग के पोर्टफोलियो सेक्शन में, आप जब नया पोर्टफोलियो बनाएंगे तो यहाँ पे ऊपर प्लस बटन दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है लोड आइसेंस फ्रॉम एक्सेल, इसको आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी एक्सेल हो, प्रोजेक्ट जस्ट कॉपी दिस, जस्ट कॉपी द कंटेंट्स ऑफ दिस बॉक्स या, एंड इसको पूरा कॉपी कर लो एंड इसको ना एक्सेल में पेस्ट कर दो कहीं पे भी खाली जगह देख के। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेल में बस यही काम करना है कि आइसिन कोड फंड का एंड उसके रुपी अमाउंट लेके यहाँ पे, हाँ ये साइड बाय साइड आपको तो प्रोजेक्ट इसको डिलीट करना, इसका बॉक्स को हाई क्लास वो કેટલા વખત પછી इसको डिलीट કેમ છો હાઈ ક્લાસ થઈ ગયા તમે તો બોડી બોડી હાઈ ક્લાસ છે આવો આવો हाँ, तो यहाँ पे सर प्रोजेक्ट का गुड द एक्सेल किया, यहाँ पे अगर आपके पास दो कॉलम में आइसिन और अमाउंट है तो आप यहाँ से कंट्रोल सी करिए, कॉपी हो गया, और आप प्लेटफॉर्म पे वापस आइए, लोड आइसिन फ्रॉम एक्सेल में जाइए यहाँ पे और इधर पेस्ट कंट्रोल वी कर दीजिए बस, और यहाँ पे वैलिडेट कर दीजिए, ये पूरा रीड करके दिखा देगा, फंड क्या स्टॉक भी हो तो वो भी आ जाएगा। तो आपको बस किसी भी एक्सेल में आइसिन कोड एंड अमाउंट साइड बाय साइड करना है, तो उसमें आपकी 50 फंड भी हो तो वो पूरे के पूरे रीड होके यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको किसी भी फॉर्मेट में मिल रहा हो, आप इजीली इसको यहाँ पे अपलोड करके फिर सेव भी कर सकते हैं। सर अभी सबका म्यूट हो गया था, हो सकता है आपका म्यूट है, आपको दिख गया ये प्रोसेस? सॉरी, हाँ जी, प्रोसेस दिख गया ब्रदर। हाँ जी, मेरा मेरा फिर क्वेश्चन है, उसमें आपने सिर्फ अमाउंट और आइजन कोड उठाया है, हाँ जी, तो अमाउंट तो हो सकता है 5 साल में बनी हो सकता है 3 साल में बनी हो, यहाँ पे आपने अमाउंट और आइजन कोड से सिर्फ स्कीम उठा ली, जब इसको अपलोड करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, हाँ जी। तो वो उसको कंपेयर किस चीज से करेंगे फिर इस चीज को? तो देखिए जो अमाउंट आप डालेंगे एक्सेल में, वो अमाउंट होना चाहिए कि आज उसका वैल्यू क्या है। हाँ, गॉट इट। हाँ, तो वो जब डालेंगे तो ये आप सोच लीजिए, मान लीजिए कि आपका पोर्टफोलियो और ये आज का वैल्यू है एज ऑफ लेटेस्ट प्राइस। ठीक है। उसके बाद जब आपने यहाँ पे लोड किया और पोर्टफोलियो को रन किया, तो अब ये क्या कर रहा है, आपके लेटेस्ट होल्डिंग्स को ले रहा है और उसको रन करके दिखा रहा है कि इसका बैक टेस्ट क्या है। परसेंटेज वाइज हो गया ना वो, तो अभी आज की डेट में उसकी जितनी जितनी प्रोपोर्शन है वो तो।
हाँ जी, वैल्यूएशन प्रोपोर्शन में आ गई ना, लेकिन कब कब कौन सा पैसा डाला है, सपोज किसी समय लमसम भी डाला है, किसी समय बीच में SIP भी है, तो तो हम उसको define कैसे कर पोर्टफोलियो, पाएंगे ना? हाँ जी सुपर, लेकिन हम जो पोर्टफोलियो एनालाइज करते हैं तो हम क्लाइंट की एक्चुअल रिटर्न को नहीं देख रहे, बिकॉज क्लाइंट ने अगर 3 महीने 6 महीने पहले SIP किया हो या 3 साल पहले SIP किया हो, बीच में लमसम डाला हो, वो जिस भी पाथ से यहाँ पे आए हैं हम उसको नहीं देख रहे, हम ठीक देख है, रहे हैं आज आपके पास क्या है, क्योंकि जो ठीक हो है, गया है वो खत्म हो चुका है, उसको हाँ आप ठीक है, एनालाइज कर सकते हो, आप बैक ऑफिस सिस्टम में XR देख लो, बट हाँ वो बात खत्म हो चुकी है, हमें हाँ, आगे का देखना है। तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं, हाँ प्रोजेक्ट स्टे ऑन दिस टैब, जैसे ये क्लाइंट है तो इनके ये अभी आज होल्डिंग्स है, तो हमारा जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है वो ये देखता है कि अभी जो होल्डिंग्स है वो सही है कि नहीं। कल मेरे पास IDFC बॉन्ड फंड नहीं था या था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल जो PNL मेरा होने वाला है, कल जो रिटर्न आएगा मेरा, वो तो इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आज मेरे पास क्या है और आज मेरे पास ये है। तो हम नाउ रन एनालिटिक्स, या तो अब हम इसको चला रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अगर ये पोर्टफोलियो मैंने पिछले 5 साल तक रखा होता, जो कि ऑब्वियसली मैंने नहीं रखा है क्योंकि मेरे पिछले 5 साल में बहुत कुछ हुआ है, बट यहाँ पे ये थ्योरेटिकल एनालिसिस है कि मैंने ये पोर्टफोलियो पिछले 5 साल तक चलाया, अगर चलाया होता तो उसके किस तरीके के रिजल्ट्स आते, कैसी वॉलिटिलिटी होती, कैसे ड्रॉडाउन होते, कैसे, ये सब देखते हैं। और इसको देखने का फायदा ये है कि ये बेस्ट चीज है ये आइडिया देने के लिए कि आगे की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। जैसे इस पोर्टफोलियो में अगर इतना ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहा है तो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि ये मार्केट, जैसे कोविड को इसने कैसे, इस पोर्टफोलियो ने कोविड को कैसे डील किया, अब लॉकडाउन को कैसे डील किया, अच्छा किया बुरा किया, तो आप इस तरह से उसको एनालाइज कर सकते हैं। और सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से एक दूसरा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जैसे कि आप उन दोनों को साइड बाय साइड उनके पास दिखा सकते हैं कि अभी आपके पास ये है, मैं आपको बोल रहा हूँ इसको हटा के आप ये करिए। So for example, projector is load anything. I think this is one old asset, so you can see it's running till 21. Just load something else. कुछ भी और ले लो। हाँ ठीक है। And just let's say model portfolio. तो आप सोचिए कि ये मॉडल पोर्टफोलियो PJ आपने बनाया है और राज मल्होत्रा लेफ्ट साइड पे क्लाइंट है कोई, तो आप यू कैन रन इट लाइक दिस एंड यू कैन से कि अभी आपके पास जो पोर्टफोलियो है वो लेफ्ट साइड पे है, वो ब्लू वाली लाइन है, लाइट ब्लू वाली, उसका बैक टेस्ट अब जब हमने हिस्ट्री पे रन किया तो उसके रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं है, ये मैच नहीं करेगा राज मल्होत्रा के एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस से, वो तो अलग है, वो हो गया। आज के पोर्टफोलियो के रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं आ रहे और आप जो उनको एडवाइस दे रहे हैं मॉडल पोर्टफोलियो PJ से, उसके रिटर्न्स काफी बेटर है। तो ये आप साइड बाय साइड, ये आपका केस हो सकता है क्लाइंट के साथ कि आप मॉडल पोर्टफोलियो PJ जो मैं बता रहा हूँ वो करिए, क्योंकि वो ज्यादा डिवर्सिफाइड है, उसके रिटर्न्स बेटर है, उसकी वॉलिटिलिटी कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये साइड बाय साइड रख के आप क्लाइंट को समझा सकते हैं कि हम आपका पोर्टफोलियो इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। पर इसमें वो आई गॉट योर पॉइंट व्हाट यू आर सेइंग, द ओनली थिंग इज इसमें तो सिर्फ परसेंटेज वाइज आपका बाइफरकेशन हो गया। अभी जैसे एक में अमाउंट थी 56 लाख, दूसरे की 20 लाख, उसने पोर्टफोलियो को बाइफरकेट कर दिया, मतलब 15% शेयर यहाँ पे था, 20% या 50% शेयर उसमें था, है ना, ऐसे ही हुआ ना जी। तो आप उसी पोर्टफोलियो को अगर वैसी सिस्टम में रन किया हुआ है तो ये बनता है, पर वो कॉम्पिटिटिव तो फिर भी नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप ने सपोज को रिटर्न हायर जनरेट कर दी थी तो उसका फंड वैल्यू तो एक्स्ट्रा आ गया। हाँ जी। लेकिन कोई पोर्टफोलियो जो स्कीम में जो पैसा मेरा पड़ा हुआ था वो हो सकता है उसमें साल पुराना पैसा भी हो या 2 साल पुराना पैसा भी हो, तो उसकी मार्केट वैल्यू कम आ रही होगी। आपने तो उसको वैल्यू को डिवाइड किया सिर्फ, लेकिन ये कंपैरिजन तो लेटेस्ट वैल्यू को, अभी जो वैल्यू है लेटेस्ट वैल्यू को जी, लेकिन जी। वो कंपैरिजन में तो फिर भी ठीक नहीं बैठेगा ना। नहीं सर, आप कंपेयर ये कर रहे हो कि आज मैं लेफ्ट वाला करूं कि आज मैं राइट वाला करूं, डिसीजन सिर्फ यही हो रहा है कि वो आज आप सिर्फ वैल्यूएशन बेस पे कर रहे हो, लेकिन वैल्यूएशन बनी कैसे हो उसके बेस पे नहीं है। नहीं एकदम नहीं, क्योंकि सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वैल्यूएशन जैसे भी बनी आपकी, हाँ नहीं, पर ऑथेंटिकेट नहीं ना बस, ये चीज ऑथेंटिकेशन इसलिए नहीं आती है
उसमें तो फिर वो स्कीम पड़ गई, स्कीम में सिर्फ आपने प्रोपोजिशन बढ़ाया, मतलब किसी में 40% कर दिया, किसी में 20% कर दिया, किसी में 10% कर दिया, करेक्ट है ना। तो अगर जो ये मॉडल पोर्टफोलियो में इसको ऐसे रन करते हैं, हाँ तो जी, आप वाला जो मॉडल पोर्टफोलियो है वो आपने 16% में डिवाइड कर दिया या हाँ जी, सारे 10% में कर दिया, हाँ जी। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इसका। डिफरेंस यही है कि स्कीम्स थोड़ी अलग होंगी और वेटेजेस अलग होंगे, लेकिन हाँ, बस वेटेजेस हाँ, अलग होंगे, स्कीम अलग हाँ, होंगे। लेकिन पर लेकिन अगर अदरवाइज आप, रेलेवेंस पोर्टफोलियो से रेलेवेंस तो कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अपना पोर्टफोलियो तो हमेशा ही बढ़िया होगा जो मॉडल पोर्टफोलियो बनाएंगे। सर वो तो बात सही है, बट पॉइंट है सर, और वैसे भी क्या ऑप्शन है, क्योंकि आप देखिए आज बैठ के हमें नहीं पता कल कौन सा फंड अच्छा करने वाला है, बिल्कुल राइट? ठीक है। तो हम कैसे डिसाइड करें? एक ही तरीका है डिसाइड करने का, हिस्टोरिकल रिटर्न देखने का। तो हिस्टोरिकल रिटर्न छोड़ के वैसे भी मार्केट में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो किसी के पास नहीं, तो हम इसका कैसे करें? इसका इसका बेस्ट वे आउट तो ये होना चाहिए, भी सपोज करो एक स्कीम में, जैसे एक किसी इन्वेस्टर की स्कीम है 5, जी, उसमें भले उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी है, तो हम हाँ सिर्फ जी, उसकी वो 5 स्कीमें उठाएं और हाँ जी, अपनी वाली 5 स्कीमें उठाएं, या 4 स्कीमें या 10 स्कीमें जो भी करनी है। हाँ जी। तो कंपैरिजन तो स्कीम वाइज होना चाहिए, तब ये बैक टेस्टिंग बेस्ट है। अदरवाइज तो जो क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट होगी वो हमेशा डाउन आएगी, 90% डाउन ही आएगी, करेक्ट है जी। है ना। तो हाँ वो जी, तो सिर्फ इल्यूजन है। देखिए मानता हूं आपकी बात इल्यूजन है, बट द पॉइंट इज इससे बेटर और कोई तरीका वैसे भी नहीं है। दिस इज हाँ द नहीं ठीक बेस्ट है। दैट यू कैन डू। हाँ नहीं, मार्केटिंग के लिए बढ़िया है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली ये गलत है। देखिए प्रैक्टिकली इसमें एक फायदा होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने जो मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है, हो सकता है कि वो अच्छी तरह से डिवर्सिफाइड है, क्योंकि आपको आई एम श्योर काफी क्लाइंट मिलेंगे जिनका एड हॉक तरीके से इधर उधर कर के पोर्टफोलियो बन गया है। हाँ, उसमें आप देखेंगे कि एक्सपोजर ढंग से डिवर्सिफाइड नहीं है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आ रही है, तो आप, दैट आई गॉट योर पॉइंट, दैट आई गॉट योर पॉइंट। दिस इज ऑल विद द स्कीम्स ना, मतलब वो अगर स्कीम उसकी 6 स्कीम सेलेक्ट करी हुई हैं जी, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं भी हो सकती, हाँ और जी, मैंने जो 6 स्कीम सेलेक्ट करी है उसमें डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर है, जी, तो वो स्कीम टू स्कीम उसकी परसेंटेज बराबर बराबर डाल के ही कंपैरिजन, जो जेन्युइन कंपैरिजन बनता है वो तो वही होना चाहिए। हाँ, आप वैसे भी कर सकते हैं कि आप पोर्टफोलियो को एग्जैक्टली उसी तरीके से बना दीजिए कि आपने यहाँ पे इस तरह से डिवाइड किया, यहाँ पे इस तरह से डिवाइड किया, तो ये सिस्टम तो ओपन है, आप जो मर्जी डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन वो प्रोसेस ठीक नहीं है, वो ठीक मार्केटिंग के लिए बढ़िया है, मतलब देखिए मार्केटिंग के लिए ठीक है, देखिए लेकिन इन्वेस्टिंग सर, इन्वेस्टिंग प्रोसेस में कुछ ठीक गलत तो होता नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पैसे बनते हैं वही जीतता है, तो हाँ, आई मीन यस यस सबका गॉट। सबका तरीका अलग होता है, तो नहीं, वो आप, अपने समझने के लिए था, क्योंकि हाँ मुझे लग जी, रहा था भी इसका कोई अदरवाइज कोई एडवांटेज उस तरीके से मिलता, वो सिर्फ काम में मिल जाएगा, मतलब बिजनेस उठाने के लिए ठीक है, लेकिन राइट कंपैरिजन नहीं। हम लोग जब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना ब्रदर, तो हमारा जो पर्पस है वो राइट कंपैरिजन मेथड होना चाहिए, मतलब 2 चीजों को एप्पल टू एप्पल वाला सिस्टम में चलना चाहिए, ये एप्पल टू एप्पल नहीं हो रहा, हाँ तो जी, हो उसको नहीं रहा, वो क्योंकि समझना चाह रहा आप, था मैं। हाँ जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप एप्पल को छोड़िए, आप ऑरेंज खरीदिए, राइट? तो अब, हाँ तो वही है ना बात कि सर मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको एक अच्छा बेटर पोर्टफोलियो सजेस्ट तो करना चाहिए या कर सकते हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ। तो फॉर नहीं, वो दैट, वो हाँ वो जी, फिर मैं कंपेयर उसी तरीके से करूंगा ना भी, मैंने 5 स्कीमें ये ली, आपकी 5 जी, स्कीमें ये हैं, जी, तो इन दोनों की बैक टेस्टिंग करूंगा डिस्पाइट ऑफ परसेंटेज, हाँ परसेंटेज जी। इज टू बी इक्वल। सर जरूरी नहीं है ना, क्योंकि आप ये बता सकते हैं कि आपकी 5 स्कीम्स ये हैं, आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, और मैं जो 5 स्कीम बता रहा हूँ मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मैं उसको इंप्रूव करूंगा, प्रोजेक्ट इज गो टू द पोर्टफोलियो सेक्शन, क्योंकि हाँ इक्वल नहीं, वेट का तो मैं वैसे भी डिस्ट्रीब्यूट, कोई सर इक्वल वेट का तो वैसे भी कोई मीनिंग नहीं है, इक्वल क्यों डाला है, इक्वल का हाँ कोई रीजन इक्वल, ही नहीं होता। दैट इज करेक्ट, इक्वल वेट हाँ मैं नहीं जी, करूंगा, मैं उसको उसकी वेटेज कम ज्यादा कर लूंगा, हाँ जी, दैट इज ओके, दैट इज ओके। उसके लिए आप सर अपना पोर्टफोलियो इंप्रूव भी यूज कर सकते हैं, सो या जस्ट कैंसिल दिस, मे बी टेक अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और समथिंग। तो सर देखिए ये 8 फंड्स हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके। अब ये जब रन हो जाता है तो ऊपर एक इम्प्रूव का ऑप्शन है, अगेन ये मैथमेटिकली जनरेटेड है सर, मतलब कभी कभी अच्छे रिजल्ट आते हैं, कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छे आएंगे, बट आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए जो रिजल्ट आया है, इसने 12% के रिटर्न को 16 कर दिया, ऑब्वियसली ये बैक बैक देख के हो रहा है,
बट पॉइंट इज कि इसने मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको वॉलेटिलिटी कंट्रोल करनी है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन देख सकते हैं, वॉलेटिलिटी इसने 10% से 5 कर दिया, हाफ कर दिया, वॉलेटिलिटी रिस्क काफी कम कर दिया। तो यहाँ पे इक्वल की जगह इसने बोला इक्वल मत करो, ये करो, राइट। तो ये एक और तरीका है कि आप स्कीम्स मत चेंज करिए क्लाइंट की, उनको बस बोलिए देखिए मैं आपके जो एलोकेशंस हैं उन्हीं को चेंज कर रहा हूँ और उसी से मैं फायदा निकाल सकता हूँ। ओके, हाँ, दिस इज गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे आप सेव कर दीजिए इनको, ये सेव का बटन है, यहाँ से आप पोर्टफोलियो सेक्शन में इसका एक और वर्जन सेव हो जाएगा जिसमें वेट्स अलग है। और एक बार आप इसको सेव करें तो फिर आप दो पोर्टफोलियो को साइड बाय साइड कर सकते हैं कि एक साइड पे इक्वल वेटेड है और एक साइड पे ऑप्टिमाइज है, जैसे वो आ गया ऑप्टिमाइज्ड। सो लेट्स गो टू द परफॉर्मेंस। सो ये आपको दिख जाएगा कि फर्क है। हमने वॉलेटिलिटी वाला लिया तो आप वॉलेटिलिटी देखिए 8% है यहाँ पे राइट साइड पे स्टैट्स में, 8% एनुअल वॉलेटिलिटी है। और हमने जो ऑप्टिमाइज देखा है उसका वॉलेटिलिटी हाफ हो गया, रिटर्न तो ऑब्वियसली कम होगा ही होगा, बट अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे वॉल कम करना है, मुझे रिस्क कम करना है, रिटर्न चाहे थोड़ा सा कम हो जाए डजंट मैटर। 11.8 की जगह 9.3 हुआ है, लेकिन वॉलेटिलिटी आप देखिए कितनी कम हो गई है। यहाँ पे आप ड्रॉडाउन्स कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि ये इसको करने का फायदा क्या था। लेफ्ट साइड वाले के ड्रॉडाउन देखिए 20-12% जाते हैं, यहाँ पे 12% तो आज तक गया ही नहीं। तो यहाँ से आपने रिस्क कम कर दिया क्लाइंट के पोर्टफोलियो का, और हाँ 2-2.5% का आपको कॉस्ट हुआ रिटर्न में। ठीक है, मेरे को ठीक है। Any other questions? Please, let us know. There's one question on the chat. How to merge two portfolios from client to compare section. So you can do that by, Prajaksh, go ahead and show this, please. Sir, sorry, there was a question on the chat. So this is how you can combine two portfolios, two or more, and then run analytics on that. Any other questions, please write on the chat or just unmute and let us know. अर्नब जी, मेरा एक क्वेश्चन है, राहुल देसाई अगेन फ्रॉम। हाँ जी। अर्नब जी, अभी जैसे मान लीजिए किसी क्लाइंट के पास मैंने उसका कैश उठाया, ठीक है, पूरा पोर्टफोलियो का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, ठीक है, और उसमें मान लीजिए कि उसके पास 60-70 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, इंडिविजुअल स्टॉक्स, ठीक है। तो मैंने वो पोर्टफोलियो को स्कैन किया, पूरा अपलोड किया, ये सब मुझे डिटेलिंग वगैरह दिख गई, ठीक है। बट अभी वो स्टॉक्स जो 60-70 स्टॉक्स या 80 स्टॉक्स उसके पोर्टफोलियो में है, उसको अगर मुझे हर एक स्टॉक्स का मान लीजिए कुछ सर्टेन पैरामीटर्स मुझे वहां पे दिखाना है, मान लीजिए 70 स्टॉक्स लिस्टिंग हो गया एक्सेल शीट में, बट उसके साइड में मुझे वहां पे उसका लास्ट 5 इयर्स का आरओई दिखता है, आरओसी दिखता है, ठीक है। फिर मुझे उसका स्टॉक का क्या ग्रोथ रहा है लास्ट 5 साल में, 3 साल में, 10 साल में, और उस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहा है, उस कंपनी का रेवेन्यू क्या रहा है। तो वो एक रेडीमेड वहां पे एक्सेल अगर मिलता है तो इट वुड बी इजियर फॉर अस टू टेक अ डिसीजन फॉर अ सर्टेन स्टॉक्स की वेदर दे शुड रिमेन इन द पोर्टफोलियो और इट शुड बी एग्जिटेड फ्रॉम द पोर्टफोलियो। श्योर सर। तो ये इस टाइप की लिस्ट में आपको फंडामेंटल डेटा जो आपने बोले वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिटर्न वाले कर सकते हैं। सो या प्रोजेक्ट जस्ट क्रिएट दिस पोर्टफोलियो। सो आप मान लीजिए 3 स्टॉक्स हैं, अब 3 की जगह आप सोचिए 80 हैं, डजंट मैटर, एक ही बात है। तो जस्ट रन इट। उसके बाद आप क्या करिए कि रन के बाद ना इसके ऊपर ऐड टू कंपेयर करिए, ऊपर जो कंपेयर का बटन है, ओके, ये आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप 3 स्टॉक्स हैं, कंपेयर सिक्योरिटीज में आ गया। ओके, और इसके सारे रिटर्न स्टैट्स आ गए, और यहाँ पे एक्सेल है, साइड में एक्सेल का बटन है, ये डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें और भी सारी चीजें हैं, रिस्क रिटर्न, मंथली, ये बाकी जितने भी टैब्स हैं सारे के सारे आपके लिए हैं, राइट। तो इसमें से आप कुछ भी ले लीजिए, बट दीज विल ऑल बी बेस्ड ऑन स्टॉक प्राइस एनालिसिस ओनली, फंडामेंटल डेटा यहाँ पे नहीं है। ओके, तो वो उसमें सर कुछ आप एटलीस्ट लिमिटेड 5-6 पैरामीटर्स अगर ऐड कर पाए तो
ठीक है, मैं इसके बारे में पता करता हूँ। जैसे आपको भी मालूम होगा, स्क्रीनर करके एक वेबसाइट है। हाँ जी। तो स्क्रीनर में क्या होता है कि व्हेन यू नो लिस्ट द स्टॉक्स, तो उसके अगेंस्ट में वो लोग उसका पूरा रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या रहा है, स्टॉक्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है, हाँ आरओई जी। उसका क्या रहा है, तो वो सारे बेसिक पैरामीटर्स वहां पे वो लोग इजीली दिखते हैं। बट इन समझ दिस गया। रिगार्ड हमको क्या करना पड़ता है कि मेरे पास 70-80 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो मैंने आपके थ्रू एक्सेल में ले लिया, फिर वो पूरे 70-80 का डेटा मेरे को 1 by 1 वहां से जाके उठा के यहाँ पे डालना पड़ता है सर। समझ गया। सो वो हम पता करके देखते हैं अगर फंडामेंटल डेटा हमें यहाँ पे शो कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो एटलीस्ट कुछ 10-15 पैरामीटर्स या इवन 5 to 10 पैरामीटर्स, विच एवर यू फाइंड इट कंफर्टेबल, कि जो इजीली अवेलेबल हो जाए, ताकि एटलीस्ट टाइम बीइंग फॉर यू नो सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक्स वी वुड बी यू नो असर्टेन सम काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस ओवर देयर, तो ताकि हम पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करने के लिए उनको रेकमेंड कर सके उस चीज को वहीं से। क्योंकि इन्वेस्टर तो क्या है कि स्टॉक्स में डालने के बाद वो ये भूल जाता है कि उसका मतलब फंडामेंटल्स क्या है, क्योंकि एक बार डाल दिया फिर वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे इससे एग्जिट हो जाना चाहिए। बट एज अ यू नो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हमको एक चीज ये दिखाना जरूरी है कि सर अगर ये स्टॉक्स नहीं चल रहा है तो दीज आर द रीजन व्हाई यू शुड गेट रिड ऑफ दिस स्टॉक्स। यस, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उसके लिए कुछ वहाँ पे पैरामीटर्स रेडीमेड, मतलब मैंने अगर 70-80 स्टॉक डाल दिए ये कैश में से स्कैन करके, तो फिर उसके बाजू में उस सबका पूरा ये फंडामेंटल थोड़ा एनालिसिस भी वहाँ पे अगर दिख जाए तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा सर। तो यहाँ पे आप लिस्ट बना सकते हैं। ये स्टॉक्स का जो सेक्शन अभी दिख रहा है इसमें वो जिस मार्केट वाला ड्रॉप डाउन है उसमें जस्ट चूज लिस्ट। तो जैसे यहाँ पे अभी कोई लिस्ट या ना हो, मार्केट पे जाओ यहाँ पे आप, लेकिन ये लिस्ट मैन्युअली बनानी पड़ती है, यहाँ पे कोई अपलोड फंक्शन नहीं है एज ऑफ नाउ। तो यू कैन जस्ट ऐसे अभी वी जस्ट कॉल इट समथिंग एनीथिंग। हाँ, इसको देखो लिस्ट में आया है कि नहीं। ओके, सो ये लिस्ट आपकी बने जा रही है। यहाँ पे आप एक एक करके जितने मर्जी ऐड कर दिए, एक बार आपने ऐड कर दिया तो ये सारा डेटा आपको आपके लिए ये सेव्ड रहेगा। बट सर एक्सेल में से अगर इसको पिक कर सके ऐसा कुछ कर दीजिए ना वहाँ पे, तो भी अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, एक्सेल में से आप पिक कर सकते हो। ऊपर आप देखो ये टेबल है, डाउनलोड ऑल डेटा फॉर ऑल स्टॉक्स। ये एनएसई के 1800-1900 स्टॉक्स हैं, सारा डेटा आपको एक्सेल में मिल जाएगा। ओके ओके, इसमें सब कुछ है। तो यहाँ से एक्चुअली आप पिक कर सकते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है, तो मुझे वहां से उधर ले जाने के लिए वी लुकअप करना पड़ेगा इसमें से मेरे ये stocks प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये प्रॉब्लम है। ठीक है सर। नहीं तो फिर यहाँ पे सीधा वो एक्सेल अगर अपन अपलोड कर सके सर, तो वैसा कुछ ऑप्शन आ जाए तो ये काफी अच्छा हेल्प हो जाएगा। वही पता करते हैं हम कि वो स्टॉक्स की लिस्ट वहां पे सेव हो सकती है। हाँ, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो ना कि माई लिस्ट, तो माई लिस्ट तो हम स्टॉक्स डाल डाल के बना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक लिस्ट तो बनी रही है। तो अगर वही सीधी लिस्ट एक्सेल से आ जाए तो काफी इजी हो जाए सर ये चीज। समझिए। ठीक है, definitely. So there's one more question. Project, let's go back to the client section. Somebody had asked to run multiple clients. हाँ, ये group है ना, एक second. So the question was that how can we save this as a new portfolio? So we don't have a quick button here, but I can show you a roundabout way. So run analytics. And once that's finished running, you can add all of them to compare. So let that come back. Now click on this. Now ये 15 funds, इसमें लेकिन फिर भी आपके percentage weightages नहीं जाएंगे, but at least the list of funds will go, because you can just convert this to a portfolio, but the weightage information will be lost. So in the meantime, what we'll do is कि Prajakta, in the client section, let's go in the client section. And click the portfolio. So we will add a button here that we have for single to copy this portfolio. एक को click करो. So we will we will add this button here, so you can actually shift it to the manual data or the portfolio section.
Okay. Prajakta, please write this down as a feature. Yes. sir. और सर वो स्टॉक्स वाला भी आप लिख लीजिएगा एक पॉइंट हाँ जी, वो तो डेफिनेटली लिस्ट में ऑलरेडी है. ठीक है, थैंक यू सो मच सर. Thank you. Any other questions from anyone? Okay, if there's nothing else, Prajakta, we can go ahead and close for today. Yes. Thank you so much for joining in. Have a great weekend ahead. Do stay tuned for our next week webinar. It will be at the same times next Friday, 4 p.m. Thank you so much.